वडोदरा विश्वामित्री नदी का जलस्तर भयावह स्थिति को पार कर जाने से वडोदरा के कालाघोड़ा विश्वामित्री ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का जलस्तर आज सुबह से लगातार बढ़ रहा है। शाम 5 बजे विश्वामित्री नदी 28 फीट पर बह रही थी। ऐसे में कालाघोड़ा ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। विश्वामित्री नदी का भयावह जलस्तर 26 फीट है, जो नदी ने पार कर लिया है और नदी का पानी निचले इलाकों में भरने की शुरुआत भी हो गई है। दूसरी ओर आजवा सरोवर भी उफान पर है। आजवा सरोवर का जलस्तर शाम 5 बजे 214 फीट से ऊपर दर्ज किया गया, जो डैम का भयावह जलस्तर है। ऐसे में आजवा डैम से भी लगातार पानी छोड़ने की स्थिति बरकरार है। वडोदरा शहर में आने वाले कुछ घंटे में गंभीर स्थिति का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एहतियात के भागरूप कालाघोड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर ब्रिज पर आवाजाही रोक दी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वडोदरा में बारिश भी लगातार मूसलाधार हो रही है। डैम का और नदी का जलस्तर घटाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय हवामान खाता द्वारा वडोदरा शहर माटे आजना दिवसमां रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे। सवारथी અત્યાર सुधीमां 9 इंच जेटलो वरसाद पड्यो छे। परिस्थिति अति गंभीर छे। विश्वामित्री नदी 28 फूटने पार थई गई छे। आजवा सरोवर 214 फूटने पार थई गयुं छे। आवनारा 2 થી 3 કલાકમાં विश्वामित्री नदीનું લેવલ 30 ફૂટને પાર થઈ અને ઓવરફ્લો થવાની શક્યતાઓ છે। આથી તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે જે લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહે છે તરત સેફ જગ્યાએ સ્થળાંતરિત થઈ જાય। કોર્પોરેશન દ્વારા 80 જેટલી સ્કૂલોને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી છે। ત્યાં ખોરાકની, પાણીની, દૂધની અને દવાઓની વ્યવસ્થા છે। આપ સૌને આગ્રહભરી વિનંતી છે કે બિલકુલ લાઇટલી લેતા નહીં। ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે। વિશ્વામિત્રી નદી 30 ફૂટને પાર થવાની શક્યતાઓ છે। આથી મહેરબાની કરી અને તંત્રને સાથ સહકાર આપો અને સેફ જગ્યા પર સ્થળાંતરિત થાઓ। વડોદરા શહેરમાં આજે સવારથી ખૂબ જ પ્રમાણમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। 8 ઇંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ વરસ્યો છે। જોડે જોડે આજવા અને પ્રતાપપુરા ડેમમાં અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ખૂબ જ વરસાદના કારણે વિશ્વામિત્રી નદી 28 ફૂટથી પણ ઉપર ચાલી રહી છે। એકાદ બે કલાકમાં આ નદીના પાણી આસપાસના વિસ્તારોમાં આવશે। પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। એટલે જે લો લાઇંગ એરિયામાં જે લોકો છે એમને સલામત સ્થળે ખસી જવા હું અપીલ કરું છું। પોતાને સલામત રાખીએ। તંત્રએ પણ લો લાઇંગ એરિયામાં લોકોને ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરી છે, બસો ઊભી છે। એટલે ટૂંક જ સમયમાં આપ સલામત સ્થળે ખસી જાઓ એવી આપ બધાને મારી નમ્ર અપીલ છે। वहीं जिला कलेक्टर बिजल शाह ने भी शहर जिला के नागरिकों को भारी बारिश के चलते सतर्क रहने का अनुरोध किया है। नर्मदा डेममांथी पाणी छोड़वामां आव्युं छे तो जिल्लामां जे असर थाय छे जे गामो ए डभोईना 3 गामो, सिनोर तालुकाना 3 गामो अने करजણ तालुकाना 11 गामो ए तमाम गामोमां गईकालथी अलर्ट जाहेर करी देवामां आव्युं छे अने आ कांठाना गामोमां तंत्रने पण साबदું કરી દેવામાં આવ્યું છે। कोईपण परिस्थितिमां शिफ्टिंग करवानी जरूर पड़े तो हजी सुधी शिफ्टिंग करवानी जरूर उपस्थित थई नथी, पण शिफ्टिंग करवुं पड़े तो पण तेना माटे संपूर्ण तैयारीओ करवामां आवी छे। आ उपरांत देव डेममांथी ज्यारे पाणी छोड़वामां आवे छे त्यारे वाघोडिया तालुकाना 17 गामो छे ए पण कांठाना गामोने अलर्ट करी देवामां आव्या छे अने त्यां पण तंत्रने साबदું राखवामां આવ્યું છે। ए ज रीते आजवा सरोवरमांथी पाणी छोड़वामां आवे छे तो तेना पण वाघोडिया तालुकामां आवता जे गामो छे તેને પણ अलर्ट કરી દેવામાં આવ્યા છે અને તંત્ર કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સ્થળાંતર કરવાની જરૂર પડે તો તંત્ર એના માટે સજ્જ થયેલું છે।